In this video, I am going to discuss the role of critical thinking in your selection and non-selection in every entrance exam like IIT JEE, AIMS, CLAT, even UPSC Civil Services exam and competitions like Olympiad and KPY tests. A natural question comes to our mind: what critical thinking is? Critical thinking is the ability to think clearly and logically, what to do and what not to do. It includes understanding ideas, logical connection between ideas, and it also includes in-depth analysis of a problem from different angles. So, this is what the critical thinking is. Coming back to the basic question, role of critical thinking in competitive exams. In any competitive exam, we are having a large number of questions, out of which say 50% are direct and 50% are good level questions. Now, direct questions can be easily attempted from your knowledge, whereas if you are interested in attempting good level questions, so you need some ability. How can you try a question, good level question, in the competitive exam? I am going to provide you 7 steps. If you apply them in that order, there is a good chance you will be able to solve a good level question. The first step is understanding the problem. So we must give some time to the problem, analyze the part which is given in the question and how it can be used in the problem. Also analyze what is to be achieved. In order to achieve this, we can achieve this, or this means redefining your targets. This is what understanding the problem means. Now the second step is noticing the difficulty in the problem. In a good level question, there is going to be some difficulty. Of course, you must see where the difficulty lies. And not only see where the difficulty lies, you have to see how to overcome that. That's more important. Alright. Third step is dividing the problem into sub-problems if possible. The problem के parts बना दो और उन parts को solve कर लो. And the fourth step is devising a systematic plan. अब यहाँ पे आपकी observation काफी रोल प्ले करेगी. You have to devise a plan कि भाई कैसे कैसे हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे. Then the most important step is carrying out the plan. That is step number 5. While carrying out the plan, you may face difficulties and you have to see how to overcome those difficulties. It's important. Alright. Then sixth is, when you have found out the solution by carrying out the plan, whether that solution gives answer to the question what is being asked. And the seventh step is there any other method by which you can solve the problem? So these are the 7 steps one should go with in order to solve a good level question. कौन कौन से? Understanding the problem.
Second is noticing the difficulty in the problem. Third is dividing the problem into parts. Fourth is devising a systematic plan. Fifth is carrying out the plan. Sixth is checking the answer. And the seventh is there any other method? So these steps are very simple. I will now clarify this step, how these can be used to solve a question. I am going to take a question from 8th standard, which I sometimes gave it to the students of 11th and 12th, and to my surprise, most of the students were unable to solve. Reason: this 8th standard question has certain steps which involves critical thinking. So with the help of this problem, I will like to clarify these 7 steps. Let's come back to the problem. These 8 numbers are on the board. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I am interested in writing these numbers in ascending order. The question is very clear. I am interested in writing these numbers in ascending order. Now, this is a very simple question, but it involves critical thinking. So, I will clarify it step by step. As far as the first step is concerned, understanding the problem. It's a very simple problem. We have to write these numbers in ascending order, means we are interested in comparing these numbers. Compare करके पहले smallest लिखेंगे, bigger, largest. In this way, I can write. So understanding the problem in this case is very simple. Second is noticing the difficulty in the problem. If you look at this problem carefully, यूजुअल जो नंबर्स होते हैं हम नंबर लाइन पे इमेजिन कर लेते हैं एंड सी जो लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन है स्मॉलर है, जो राइट ऑफ द नंबर लाइन है बिगर है. अब यहां देखो एक ही नंबर विजुअलाइज हो रहा है नंबर लाइन पे, बाकी सारे के सारे नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. दीज नंबर्स आर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दिस इज द डिफिकल्टी इन दिस प्रॉब्लम. अब सिर्फ डिफिकल्टी नोटिस नहीं करनी, अब हमको ये भी देखना पड़ेगा हाउ टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी. चले तो देखते हैं कि हम इस डिफिकल्टी को कैसे ओवरकम करेंगे. चलिए, वी आर इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग नंबर्स जिसमें बेस भी है पावर भी है. बेस भी है पावर भी है. बेस हो गया एक्सपोनेंट हो गया, बेस हो गया एक्सपोनेंट हो गया. आई एम इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग दिस टू नंबर. अब दिस इज सेम होगा. इफ आई सपोज बी इज लेस देन सी, इसका एक्सपोनेंट छोटा है, इसका बिगर है. ऑलराइट, बताओ विच नंबर इज बिगर? नेचुरल है, इसका जो एक्सपोनेंट है बिगर है, बेसिस तो सेम है, तो दिस इज द बिगर नंबर. एनी डाउट? सिंपल एनालिसिस. चलिए, इसके बाद सपोज हमारे पास नंबर्स हैं जिनकी पावर सेम है, बी रेज़ पावर ए, सी रेज़ पावर ए, एक्सपोनेंट सेम है. अब बेसिस जो है फॉर बी लेस देन सी, बोलो विच इज बिगर? नेचुरल है, इसका बेस छोटा है, इसका बेस बड़ा है, तो दिस नंबर इज बिगर. नो प्रॉब्लम एट ऑल. इतना एनालिसिस करेक्ट हुआ. प्रॉब्लम कम्स then one number is a raised power b, another is c raised power b. Base भी different है, exponents भी different है. Now there is difficulty in the problem. How to overcome this difficulty? That is the main thing. चलिए देखते हैं. If I take a less than c, इसका base इसके base से कम है, and b less than d, इसका एक्सपोनेंट इसके एक्सपोनेंट से कम है, तो इसका बेस भी छोटा है, एक्सपोनेंट भी छोटा है, तो नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा.
तो डेफिनेटली दिस इज लेस देन। तो इस केस में तो प्रॉब्लम सॉल्व है, बट ऐसा भी तो हो सकता है अगर एक्सपोनेंट पहला छोटा है, दूसरे का एक्सपोनेंट बड़ा है, पहले का बेस बड़ा है, दूसरे का बेस छोटा है, उस केस में क्या होगा? लेट्स टेक द एग्जांपल। मीन्स A raised power B and C raised power D. We are interested in comparing them. And we know A is less than C and B is greater than D. A is less than C, B is greater than D. अब बेस इसका छोटा है, इसका बड़ा है, एक्सपोनेंट इसका बड़ा है, इसका छोटा है. Now, how to compare such numbers is the difficulty in the problem. चलिए इसको हम ओवरकम कर सकते हैं. To overcome this difficulty, let's take an example. Say, आपके पास दो नंबर्स हैं, 31 raised power से 23 and 2 raised power 124. We are interested in comparing these two numbers. These two are exponential numbers. हमने इनको कंपेयर करना है. All right. Base of first is greater than base of second, and exponent of first is less than exponent of second. मतलब पोजीशंस उल्टी है. अब कैसे कंपेयर करें? देखते हैं. देखिए यहां बेस है 31, 2 तो एक नाइस बेस है. 2 की पावर को हम तो वैसे ही याद है. 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो. अच्छा, ये जो पावर्स ऑफ 2 हमने ली तो 31 के आसपास है, वेरी नियर टू 31, 32. 31 is definitely less than 32. All right. And what about 32? Is 2 raised power 5. अब हमारा नंबर है 31 raised power 23, राइट? तो मैं इस नंबर की रेस पावर 23 कर देता हूं और इस नंबर की भी रेस पावर 23 कर देता हूं. ऑल राइट. सो दिस बिकम्स 2 रेस पावर 150. अब देखो, दिस नंबर इज डेफिनेटली लेस देन दिस. अरे साहब, तो हमारा नंबर तो ये है, ये नंबर तो इवन बिगर है, बेस सेम है, पावर और बड़ी हो गई 115, 124. So, first number is smaller than second number. So, in this way, we can overcome the difficulty in this question. Alright, तो हमने डिवाइस करा गई जिससे हम डिफिकल्टी को ओवरकम करेंगे. मीन्स स्टेप नंबर 2. दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप. हाउ टू ओवरकम द डिफिकल्टी, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. अच्छा, चलिए थर्ड इज डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स. अब यहां पे अगर आप देखें, देयर आर नंबर्स जिनका बेस क्या है 2, 2, 2, 22, 2. देयर आर नंबर्स विद बेस 22, 22, 22. ऑलराइट, एंड दीज आर डिफरेंट. तो हमने अपनी प्रॉब्लम के पास कर दी. जब हम इनको करेंगे इकट्ठा कर सकते हैं, जब हम इनको करेंगे इकट्ठा कर सकते हैं. तो वी कैन ट्राई द प्रॉब्लम इन पार्ट्स. नाउ आई एम पासिंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप, डिवाइसिंग अ सिस्टमैटिक प्लान टू सॉल्व इट. अब हम कंपैरिजन कैसे कैसे करें. देखो, ये चीज आएगी ऑब्जर्वेशन से. तो हियर ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. देखें, अगर हम देखें, ये है 2222, नंबर लाइन पे विजुलाइज हो रहा है. ये है 222 इंटू 222, वेरी बिग नंबर. एंड दिस नंबर इज 22 raised power 22, 22 into 22 into 22, 22 times, even far bigger. 2 raised power 222,
2 into 2 into 2, 2 raised power 10 पता कितना होता है? 1024. 2 raised power 11, 2048. अब ऐसे ऐसे 2 को मल्टीप्लाई करना है, 222. वेरी वेरी बिग नंबर. Now coming to this 22 raised power 2 square. 2 square means 4. But 22 raised power 4. Basically this number is 22 raised power 4. This number is far smaller than this number. Observation से ही पता लग गया, कुछ comparison हो गया. All right. Then we are having 2 raised power 22 square. What is 22 square? 484. Or here it is 2 raised power 222. Here it is 2 raised power 484. Naturally, this is better. Observation से ही काम चल गया. And this number 2 raised power 2 into 2 into 2 into 2. How many times? 22 times. It's a very, very big power, far bigger than 484. So, this is even bigger. So, what about this? So, 4 times आ गया. देख लो इसको, क्या है? What this number is? चल, लिखते हैं इस नंबर को. 2 square is 4. So, 2 raised power 2 raised power 4 is equal to 2 raised power 60. So, this number is nothing but 2 raised power 16, far smaller than this, right? तो ऑब्जर्वेशन से हमको आइडिया लगा कि हम प्लान कैसे डिवाइस करेंगे. प्लान करते नेचुरल है. पहले तो हम फर्स्ट 2 को कंपेयर करेंगे. वी आर गोइंग टू कंपेयर 222 ना 2222 एंड 222 स्क्वायर. फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करेंगे. ऑलराइट. नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप देखो ये नंबर छोटा है 22 raised power 4, तो 22 raised power 2 raised power 2, और ये नंबर 2 raised power 2 raised power 2 raised power 2. अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे. राइट. अब जब इन दोनों को कंपेयर हमने कर लिया, इसका कंपैरिजन का हमको ऑलरेडी पता है, तो हम सॉल्यूशन के टाइप यूज कर लेंगे. Then we are of course going to compare this with this. 22 raised power 22 with 2 raised power 222. इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. और इन दोनों को कंपेयर करने के बाद अब इनका कंपैरिजन तो ऑलरेडी पता है. किनका? 2 raised power 222 and 2 raised power 22 square. And in fact इन दोनों का भी कंपैरिजन पता है. तो these are the basic steps जो हमने करने हैं. So we have devised our plan how we are going to achieve the target. All right. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैरिंग आउट द प्लान. हमने ये प्लान कैरी आउट करना है. जो डिफिकल्टीज आएंगे उसको ओवरकम करेंगे. करें कैरी. अब जब हम इस स्टेप को प्रूव करना चाहते हैं, चलिए 2222 एंड 222 स्क्वायर इनको कंपेयर करना है. अब ये कंपेरिजन ऑलरेडी पता है. तो आपको पता है 20 स्क्वायर 400, 30 स्क्वायर 900, 40 स्क्वायर 1600, 50 स्क्वायर 2500. बड़ा हो गया. सो 2222 is less than 50 square, which is definitely less than 222 square, right? So this number is definitely less than this. तो अब ये कंक्लूजन हम देख लें. टेंटेटिव हमने इनको नंबरिंग कर दी 1. दिस इज टेंटेटिव. क्यों? मेरे को इसको आगे भी कंपेयर करना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट. Next step of the plan is I have to compare these two numbers, 22 raised power 2 square and 2 raised power 2 raised power 2 raised power 2. All right. This number is 22 raised power 4 and this number is 2 raised power 16.
Just now I told. I am interested in comparing these two numbers. If you look at it carefully, basis तो सेम नहीं है, पावर सेम बन जाएगी. कैसे? You have 4, 16 को लिख लें, 2 raised power 4, 4 raised power 4, 4 4 16. Alright. अब इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 2 raised power 4, 16 raised power 4. This is 22 raised power 4, this is 16 raised power 4. Powers are same, basis इसका बड़ा है, greater. तो टेंटेटिव हमने कर दिया इसको 3, इसको कर दिया हमने 3, एंड इसको हमने असाइन कर दिया नंबर 4. दिस इज ओनली टेंटेटिव. Why I use the word tentative? Reason, अभी मैंने इन दोनों को कंपेयर नहीं किया. Now I am coming to the comparison of these two. This is 222 square and this is 2222. Alright. Now this is 222 square and this is 2 raised power 16. Again, bases are not same. Exponent same बन जाएंगे. Exponent में चाहता हूं 2, तो इसको मैं लिख देता हूं 2 raised power 8 whole square. Alright. What is 2 raised power 8? 256 square. अब बताओ 222 और 256 में which one is greater? This is greater, so this is smaller. So this is smaller than this. तो जो हमने ऑर्डरिंग दी है वो स्टेल कर दिया 1 2 3 4. ऑलराइट. यस, चलिए आगे चलते हैं. अब हम पहुंच गए 1 2 3 4. 4 के बाद अगर आप देखें इन दोनों का कंपैरिजन डायरेक्ट है. 22 raised power 4, 22 raised power 22. बेसिस सेम, इसका एक्सपोनेंट बड़ा है, तो दिस इज 5. राइट. अब हम ये टेंटेटिव 5 है. आई हैव टू कंपेयर दिस विद दिस. तो 22 raised power 22 and 2 raised power 222 to be compared. ये हमारा हो गया स्टेप. नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्लान. अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है. अब देखो यहां बेस है 22, यहां बेस है 2. अब कंपेयर कैसे करें? 2 की पावर तो पता है, अभी मेथड बताया था. तो 22 इज लेस देन 32. 22 तो नहीं है, राइट. दूसरी तरफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. ऑलराइट. तो दिस इज नथिंग बट 2 raised power 5. ऑलराइट. अब 22 की पावर कितनी है? 22. तो रेजिंग पावर टू 22. रेजिंग पावर टू 22. दिस बिकम्स 2 raised power 110. ऑलराइट. तो दिस इज लेस देन दिस. And this is far bigger. This is less than 2 raised power 222. अब basis same है 110, 222 में ये बचता है. All right. So out of these two numbers, which one is greater? This one is greater. तो ये आ गया आपका रैंक नंबर 6. All right. सिक्स के बाद हमने इसको कंपेयर करना है इससे. दिस इज 2 raised power 484. 484. हियर द एक्सपोनेंट इज 222. तो दिस आ गया रैंक 7. एंड फाइनली आते हैं इस पे. व्हाट अबाउट दिस? 2 raised power 484 से क्या ये बड़ा है? पता है 484 लेना है. 484 इज डेफिनेटली लेस देन 2 raised power 9.
क्वाइट नंबर 12। तो ये तो है 2^22, 2^9 से तो बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब है दिस इज फार बिगर, so in this way I carried out the plan. All right, अब आफ्टर कैरिंग द प्लान हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा आंसर है वो करेक्टली आंसर दे रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। असेंडिंग ऑर्डर था, ये ऑर्डर तो बनाया है, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8, आंसर कर रहा है, तो 6 में कोई दिक्कत नहीं है, 7। Is there any other method by which we can compare these numbers? सोचते हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स नंबर लाइन पे हो सकता है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हमने जो किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। अब एक्सपोनेंट्स को आप लॉगरिथम्स में चेंज कर सकते हो, जैसे दो नंबर कंपेयर करने हैं, p⁻q r⁻s, इनको कंपेयर करने की बजाय टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ दिस। अब जब लॉग ले रहे हो बेस 10 ले लो, कॉमन लॉग, तो ये बन गया q इंटू लॉग ऑफ p टू द बेस 10, ये बन गया s इंटू लॉग ऑफ r टू द बेस 10। अब इन लॉगरिथम्स की वैल्यूज तो मिलेंगी टेबल से, वो 4 प्लेसेस डेसिमल में आएंगी। अब वो 4 प्लेसेस तक आप जब निकालोगे इनको, इसे टाइम कंज्यूमिंग जॉब, तो हर नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर उन लॉगरिथम्स को कंपेयर करना पड़ेगा टू अचीव द टारगेट। तो ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सो वी आर यूजिंग दिस मेथड। तो वी कैन ट्राई this question by another way, that is logarithms, right? So in this way I am able to solve this good level question. All right, some of the students may think it's a very, very time-consuming job. How can we apply such methods in questions in the entrance exam? Absolutely right. Even I took more than 10 minutes to solve the question on the board. So, in entrance exam, you usually get 3 to 4 minutes to solve a question, depending upon the various entrance exam. So, इतना टाइम तो मिलेगा ही नहीं। Then how can we apply this method to solve a question in the entrance exam? Reason, if you are studying in say 10th, आपको ये गुड लेवल का मेथड 10th से ही प्रैक्टिस करना है। आपको सारे क्वेश्चन में ये मेथड नहीं लगाना। 10th में यूजुअली क्या होता है, 95% क्वेश्चन निकल जाते हैं, 5% रह जाते हैं गुड लेवल क्वेश्चन। उन गुड लेवल क्वेश्चन में ट्राई टू अप्लाई दिस मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। 11 में पहुंचते पहुंचते 80% ही निकलते हैं, फिर 20% जो नहीं निकलते उन पे ये मेथड ट्राई होगा। एंड 12th में 80 से कुछ परसेंटेज बढ़ सकती है, तो 90 तक निकल जाएंगे, फिर भी 10% पे आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। तो जब तक आप इस मेथड की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस 10th में भी होगी, 11th में भी होगी, 12th में भी होगी, ओनली देन यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट दिस थिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम। तो ये चीजें इनकल्केट हो जाएंगी आपकी हैबिट में, यू विल अप्लाई दिस थिंग्स अननोइंगली, और जब वो हो जाएगा तो विल बी वर्किंग एट द फास्ट पेस। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व अ गुड लेवल क्वेश्चन विद दीज 7 स्टेप्स इन माइंड। कौन कौन से स्टेप्स हैं बोलो? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम या अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, second, noticing the difficulty in the problem, third, dividing into parts, fourth, devising a systematic plan, fifth, carrying out the plan, sixth, checking the answer, and the 7th is any other method. All right. चलिए, if you are interested in mastering the skill of critical thinking, तो अगर आपने ये एबिलिटी डेवलप करनी है ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग,
तो अगर ये एबिलिटी आप डेवलप करना चाहते हो तो आपको कुछ स्किल्स को शुरू से डे बाय डे बेटर करना पड़ेगा. इफ यू आर गोइंग टू इंप्रूव दोज स्किल्स, ओनली देन यू कैन एग्जामिन अ प्रॉब्लम क्रिटिकली. अब ये कौन सी स्किल्स है? तो आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द स्किल्स जो आपको एनहांस करनी है. द फर्स्ट स्किल जो मैं चाहता हूं आप एनहांस करें, दैट इज ऑब्जर्वेशन. अब देखो यही क्वेश्चन था, ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. हमने ऑब्जर्व किया कि भाई बेसिस 2 वालों को डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, तो या 22 को नियर नंबर से कंपेयर कर लो. तो दिस ऑब्जर्वेशन हैज टू बी देयर. अब ऑब्जर्वेशन तो इवन अगर कुछ पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई विल लाइक आप अपने बच्चे में ऑब्जर्वेशन बचपन से डाल सकते हैं. जब आप उसको मार्केट लेके जाते हैं, जब मार्केट से वापस आएगा, आस्क अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस इन द मार्केट. तो यू आर सरप्राइज, बच्चा बहुत सारी चीजें बताएगा. तो उसको आपने शाबाश देना है और उसको बेटर बनवाना है अपने बच्चे से. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट इज एनालिसिस. आपने देखा यहां पे इस प्रॉब्लम में हमने एनालिसिस का यूज किया. अब एनालिसिस हमने नंबर लाइन का नहीं यूज किया, हमने एनालिसिस यूज किया जब हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे. वो एनालिसिस जब मैं ए रिस्पॉट बी रिस्पॉट सी वगैरह लिख रहा था, इन दैट केस वी वेंट विद द एनालिसिस. और ये एनालिसिस आप बच्चे में भी इनकलकेट कर सकते हैं. जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से, ब्रदर सिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको सोल्यूशन नहीं दीजिए बना के, तो भैया चलो मिलके सॉल्व करते हैं. जब वो सॉल्व कर रहा है आपके साथ बैठा हुआ तो ही इज लर्निंग सो मेनी थिंग्स, मीन्स ही इज लर्निंग एनालिसिस. इसके बाद थर्ड, भाई एनालिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरप्रिटेशन. अब इंटरप्रेट तो करना पड़ता है, क्वेश्चन को भी इंटरप्रेट करेंगे, आंसर को भी इंटरप्रेट करेंगे. अब इंटरप्रिटेशन की हैबिट होनी चाहिए कि बच्चा करेक्टली इंटरप्रेट कर पाए, या इस स्किल को आपने बेटर बनाना है. फोर्थ स्किल इज डिसीजन मेकिंग. अब डिसीजन मेकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एंट्रेंस एग्जाम. तो डिसीजन मेकिंग को अगर आपने बेटर करना है, ये भी बचपन से स्टार्ट हो सकती है. आप अपने बच्चे को मार्केट भेजिए, मार्केट में उसको कहिए कि भाई ये चीजें लेके आ रही है, लेट द चाइल्ड डिसाइड. हम उसको ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहां जाना, ये करना, वो यही मांगेगा, इतना देना, नहीं. लेट द चाइल्ड डिसाइड. कभी वो गलती करेगा पर वो गलती करने के साथ साथ सीखेगा. तो डिसीजन मेकिंग वहीं से इनकलकेट हो जाएगी. इस क्वेश्चन में भी हमने डिसीजन मेकिंग यूज करी. नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग के बाद आती है क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी इज द डिजायर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. कभी आपने छोटे से बच्चे का ऑब्जर्व किया है, 3 years ओल्ड, कितने क्वेश्चन पूछता है, कई बार हम तंग हो जाते हैं, नहीं नहीं और मत पूछो, उसको स्नब करके बिठा देते हैं. बस वहीं पे हम रॉन्ग है. उसको स्नब नहीं करना, उसकी डायरेक्शन को ठीक करना है. दैट क्यूरियोसिटी हैज टू बी देयर. इसके बाद आता है लॉजिकल थिंकिंग. भाई जब भी आपका बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आप ये देखिए लॉजिकली कर रहा है कि नहीं. मतलब फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, हैपवर्ड थिंकिंग नहीं. अगर आप लॉजिकल थिंकिंग की हैबिट डालेंगे, ओनली देन ही विल बी एबल टू सॉल्व गुड लेवल क्वेश्चन. नेक्स्ट, इसके बाद आती है क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इज द ability to get new ideas from the old one. different ways में सोचना, that is creativity. और इनफैक्ट आप ये क्रिएटिविटी 1-1.5 साल के बच्चे में भी नोटिस करते हैं जब वो ब्लॉक्स बना रहा है. क्रिएटिंग समथिंग. एंड इसके बाद लास्ट में आती है एम्पैथी. मीन्स the ability to think about the problem from others' perspective. वो क्या सोच रहे हैं, तो ये चीज लेटर ऑन इन लाइफ आएगी.
बिगिनिंग में जब बहुत छोटा बच्चा होता है वो आ सकते हैं। सो दीज आर द स्किल्स। ये 8 स्किल्स जिनके नाम दिए मैंने। फर्स्ट स्किल क्या थी? ऑब्जर्वेशन। सेकेंड स्किल एनालिसिस। थर्ड स्किल इंटरप्रिटेशन। फोर्थ डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ क्रिएटिविटी, नहीं फिफ्थ हमने बोला था क्यूरियोसिटी, राइट। सिक्स्थ लॉजिकल थिंकिंग। सेवेंथ क्रिएटिविटी एंड एट्थ एम्पैथी। So these are the 8 skills which is to be developed in order to master the ability of critical thinking. तो इन स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा। और जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं छोटे छोटे बच्चों में ये स्किल्स इनकॉर्पोरेट होती हैं और वहीं से वो आदत उसकी आगे जाती है। ट्यूशन डज नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। क्वेश्चन कराएंगे, ये स्किल्स नहीं डेवलप करेंगे, राइट। इन स्किल्स की डेवलपमेंट होगी थ्रू प्रैक्टिस। हाँ, एट RM classes we try to develop these skills through problems. कि ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन दो, फिर एनालिसिस पे क्वेश्चन दो, फिर डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन दो। तो we try to formulate questions like this so that their skills enhances. अगर ये skills बनेंगी, only then the student will be able to examine the problem critically. All right. चलिए, इन स्किल्स के बाद कमिंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इफ a child is able to master, if a student is able to master these technique of critical thinking, he is bound to get success in every entrance exam like IIT, Olympiads, KETY tests, and even civil services UPSC exam। तो क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़ी हुई है उसकी सक्सेस। Actually, success is not a very appropriate word. I must say, for excellence in life, critical thinking is a must. Finally, a natural question comes to your mind: who is going to help us to develop critical thinking? So, what I can do at this juncture of my life, I am a senior citizen. I can help you out to develop critical thinking. How I can help you out? I can put lectures on YouTube regularly. अब आपको ये lectures कैसे मिलेंगे? आपको YouTube चैनल RM क्लासेस चंडीगढ़ पे जाना पड़ेगा। किस पे? RM क्लासेस चंडीगढ़ पे। वहां पे रेगुलरली नेक्स्ट वीक से हम ये लेक्चर्स अपलोड करेंगे। These lectures will contain questions. At least 50% of them will require critical thinking to solve. So what you can do? You can apply those 7 steps to solve the question. उससे आपकी ऑब्जर्वेशन भी बढ़े, उसके आपसे एनालिसिस भी बढ़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग ना अगर स्टेप डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन, वो सारी स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, मीन्स आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। ऑलराइट, अब YouTube चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, ऑफ कोर्स यू आर नॉट टू पे एनीथिंग, दिस ऑफ कोर्स फ्री ऑफ चार्ज, एंड आप ये लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं। और not only the students but even the parents can enjoy the lectures. तो अब एक फाइनल चीज, लेक्चर्स के लिए प्रीरिक्विजिट है बच्चा 10th लेवल से कम का नहीं होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे कर सकते हैं, 11th के कर सकते हैं, 12th के कर सकते हैं, और आगे किसी भी क्लास के कर सकते हैं। दे कैन एंजॉय विद दीज लेक्चर्स। इन द एंड आई विल से फॉर excellence in life, critical thinking is a must. And okay then, thank you, all the best.